Good morning, students. Today we are going to start with partnership accounting. First, we will revise all basic entries after a long time. So first, quickly revise two approaches. One is traditional approach, second one is modern approach. In case of traditional approach, first, yes, rules of accounts are personal, real, nominal. Personal account, there are two rules. In study material, we have only one rule, but what is the second rule? First, any relationship starts with debtor, creditor. So when you are selling goods, it is a debtor, and when you are buying goods, he is your creditor. So debit the debtor, credit the creditor, debtor becomes giver and creditor becomes receiver. Real account debit what comes in, credit what goes out, and nominal account debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Modern approach, asset minus liability is equal to capital, or asset is equal to liability plus capital. Asset shows debit balance, liability shows credit balance, capital shows credit balance, expenses shows debit balance, and income shows credit balance. So friends, after understanding basic rules of accounts today, now there are only, I think, two chapters which are remaining. One is partnership accounts and second one is a company accounts. Weightage for partnership accounts is 16 marks. In this, what is constitution of business? That is, in case of why we are learning partnership accounts, that I'm going to explain it in detail. But remember, in partnership, you have almost 60 to 70 pages to cover, and weightage is 16 marks. So my suggestion, on first, in only first session, I'm telling you, my suggestion, yeah, if you don't tally your answer, but try to complete all adjustments. Goodwill adjustment is very important. Revaluation account is important in the partnership, and logical learning is important in partnership. If you skip this chapter at foundation level, it doesn't matter. But remember, it will annoy you in the intermediate. Okay, so in intermediate, you have in advanced accounts 16 marks mandatory question. And at that time, if your basics are not good, in that case, you will definitely going to face problem if partnership accounting is in option. So बहुत से बच्चे पार्टनरशिप अकाउंट्स बोलते हैं सर बहुत ज्यादा है 16 मार्क के लिए. आई ऑल्सो नो इट कि ये 16 मार्क के लिए बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है. बट प्रॉब्लम इज दैट आपका बेस यदि यहाँ पे प्रॉब्लम में रह गया तो इंटर में बेटा पक्का प्रॉब्लम फेस करोगे. तो मेरा सजेशन एक ही है कि भाई कोई भी पार्टनरशिप ऑप्शन में नहीं रखेगा. यू विल अंडरस्टैंड माय टेक्निक्स ऑफ पार्टनरशिप. वो पार्टनरशिप के टेक्निक्स इफ यू अप्लाई इट प्रॉपरली, योर प्रॉब्लम, आई एम गिविंग यू एश्योरेंस, 100% tally. Okay, but you have to understand why partnership account. Before starting partnership accounts, what happens? Yes, I will tell you in real life. It's always better to have partnership deed. So whatever disputes between all partners, that can be resolved by using partnership deed. So there is no question. Suppose now if I started my new business with my partners, in that case, suppose if I'm working more than 8 hours and if I ask for salary, they will say, no, you are a partner. Okay, so you won't get any salary. But suppose if in partnership deed, if it is mentioned that they will pay me salary if I work daily 8 hours in partnership, they have to pay. But if partnership deed is silent, I can't demand any salary in case of there is no partnership deed. So there are some situations where you need accounting. Okay, and that accounting, so you may have clients in your life after becoming chartered accountant or partnership business, and in that case you have to do such type of accounting in which you will record interest on capital, you may record salary to the partner, you may, yes, there is maybe a case where new partner is admitted into the business, and then you have to revalue all your assets. Those students who are
from science background understand these are the situations that you are going to face in your real life, and that's why partnership accounting is very important. आप आपके रियल लाइफ में ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आपके पास आने वाले हैं कि जहां पे पार्टनरशिप अकाउंटिंग की जरूरत रहेगी, और वो जहां पे मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि देखो बिग फोर नॉर्मली ये ऐसे केसेस में क्या होता है कंपनी के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे, बट स्मॉल फर्म्स और मीडियम साइज फर्म्स अभी पुणे जैसे सिटी में पार्टनरशिप में, अभी मेरे ऑफिस में जब मैंने आर्टिकलशिप किया था तो 90% पार्टनरशिप फर्म्स एंड 10% जो थे वो कंपनीज थे। तो ऐसे क्लाइंट्स उनके साथ भी आपको सिचुएशन हैंडल करने पड़ेंगे, और वो केस में पार्टनरशिप अकाउंटिंग पता होना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मिडल बिजनेसेस जो भी रहेंगे तो यहाँ पे पार्टनरशिप के केसेस ज्यादा रहेंगे, और ऐसे क्लाइंट्स आपको जब अकाउंटिंग के लिए आते हैं और आप उनको बोलोगे कि सर हमारे सिलेबस में पार्टनरशिप अकाउंटिंग नहीं था, तो ये सिचुएशन कितनी खराब रहेगी ये समझ सकते हो। तो वहां पे आपको पार्टनरशिप अकाउंटिंग का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बिफोर स्टार्टिंग टुडे सेशन, यस लेट्स से पार्टनरशिप अकाउंट विल टेक 6 to 7 days, पर उसके पहले मुझे सबका गुड मॉर्निंग आया हुआ चाहिए। चलो गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आज तो केशव कोठारी ने गुड मॉर्निंग बोल दिया सर, यश गुप्ता, एकता तिवारी जी और बसवती रॉय फ्रॉम एसआरओ, शी स्टार्टेड कि सर के दोनों रूल्स ऑफ अकाउंट्स कैसे बताए जाए। मोहम्मद जी बोल रहे वेरी गुड मॉर्निंग सर, वी फील सो हैप्पी व्हेन यू टीच अस, बेस्ट बेटा, थैंक यू। सो बाकी के बच्चों ने गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जल्दी से बता दीजिए। आदिश शाह जी, अविनाश जी, सर आपको जुकाम है क्या? नहीं बेटा, थोड़ा सा शुरुआत में आता हूँ तो थोड़ा आराम से गया आज, तो एनर्जी लेवल इसलिए आपको डाउन लगा रहेगा। सर वॉइस इज लो, ठीक है मैं वॉइस बढ़ा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आज की एनर्जी हमें लगा अभी तक टॉपिक शुरुआत नहीं हुआ है तो एनर्जी डाउन ही रहने वाला है, तो अभी टॉपिक शुरू होने के बाद एनर्जी अपने आप आ जाएगा। और पुणे में थोड़ा बारिश भी चल रहा है तो हो सकता है कि मेरा तबियत थोड़ा सा यस है थोड़ा ऊपर नीचे। चलो स्टार्ट। पार्टनरशिप अकाउंट्स यूनिट 1, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट्स। Sir, it is similar to class 12 theory. Yes, beta, theory is you already studied in class 12. But thinking I want to change. I'm going to change your thinking in case of partnership. Okay. So partnership जो 11-12 स्टैंडर्ड में पढ़ा था और यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस रहने वाला है। यहाँ पे एवरीथिंग वहां पे कर दिया था, और यहाँ पे आप खुद को पूछोगे व्हाई दिस एडजस्टमेंट। ओके, सो दैट इज अ बेसिक डिफरेंस। चलिए, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट। सो फर्स्ट वन, this chapter is divided. Unit 1, introduction to partnership accounts. Then we have to understand goodwill adjustments, then admission, retirement and death. 5 units, sir, 5 units and 16 marks ke liye 5 units. But beta, once you understood all adjustments, these adjustments are similar in case of partnership accounts in every chapter. Goodwill adjustment will be there. Evaluation adjustment will be there. Interest on capital, salary, remuneration, commission, all these adjustments will be there in every unit. Okay, so first we have to understand what is the introduction part. I'm not going in very detail for introduction part. This is only a case where you have to understand how partnership account looks like. Second one, what is the goodwill adjustment? So what is goodwill, that we have to understand. Partnership deed क्या होता है वो हम लोग समझ लेंगे, partnership deed. Then if partnership deed is silent, in that case how to solve question, then we have to understand formats of capital account. Okay, so capital account T format, so how to prepare it, and what is the difference between P&L account and P&L appropriation, that we are going to see it in this unit. Okay, so P&L and P&L appropriation, so these are very simple parts in introduction to partnership account. So why we have to understand this? We have to understand format, okay, in partnership accounts, and that is very, very important. Okay, sir, first one, raise the voice. Okay, ईशा पंडित मेरा कब से यही बोल रही है सर, रेज द वॉइस, वॉल्यूम कम आ रहा है। ओके, वॉल्यूम कम आ रहा है क्या? एक बार मैं चेक करवा देता हूं। या ईशा पंडित सिर्फ अकेली ही बोल रही है वॉल्यूम कम आ रहा है? बेटा आप प्लीज कीपैड का वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, आई थिंक आपके साइड से कुछ तो दिक्कत आ रही है। Okay, so in case of partnership accounts, first we have to understand what are basic concepts, then admission,
retirement, death, and basics में we are going to cover introduction part and goodwill adjustments. So basics में we have to cover what two parts: introduction, goodwill adjustment. Introduction, goodwill adjustment. Okay. So what is the chapter overview? What is partnership? Yes, very simple. You already covered. Yes, tell me it in the comment section. In law, have you covered this partnership act or not yet? Partnership deed, minor as a partner, partnership deed is silent, system of capital account, payment or expenses of income, formats, P&L versus P&L appropriation, and interest on drawing concept का shortcut. So interest on drawings, shortcut. Okay. चलिए. What is partnership? Yes. Already covered? Okay. What is partnership? It is a relationship between two or more persons to do some commercial activity. But obvious, commercial पैसा आने के लिए सब लोग ये बिजनेस करते. यहाँ पे चैरिटेबल ट्रस्ट तो है नहीं. Okay. 1 second. To do some commercial activity, then carried by all or any one of them acting for all. So it's very important. Anyone can do this partnership. So on behalf of them, if any partner takes decision, then other partners have to understand, and that decision is on behalf of partnership firm. Remember. And for mutual benefits, so it's only for their mutual benefits. If any decision is taken in interest of any partner, that decision is not binding on other partners. Let's understand. So this is a partnership. What is partnership deed? So how partnership deed we take it now? It's better. Deed तो आपको बनानी पड़ती है, एक पेपर पे स्टैम्प पेपर लेना पड़ता है, उसके ऊपर पार्टनरशिप डीड पहले 500 रुपीज में आता था. नाउ प्राइजेस ये कैपिटल के हिसाब से आपको देना पड़ेगा. सो हाउ इन राइटिंग व्हाट detailed terms and conditions. Why? To avoid misunderstanding or future disputes. So that partnership deed, if you, I will show you it on in next session how partnership deed is prepared. And now it is बेटा mandatory. पहले क्या होता था, हम लोग जब आर्टिकलशिप में थे बहुत पहले का टाइम, तब हमें ये पार्टनरशिप डीड लेके रजिस्टर ऑफिस में जाना पड़ता था. अभी पुणे में यहाँ पे एक एरिया था, वहां पे हमें ये पार्टनरशिप डीड लेके जाना पड़ता था. ना बेटा दिस इज ऑनलाइन प्रोसेस. ओके, सो एवरीथिंग इज ऑनलाइन. तब बेटा हम लोग कैश लेके घूमते थे, गूगल पे का जमाना नहीं था. तो अभी कैसा है, ये मैंडेटरी क्या हो गया है, इट्स ऑनलाइन प्रोसेस. सो दैट पार्टनरशिप डीड यू कैन रजिस्टर योर फर्म by doing online process. Okay, so all documents you have to scan it and submit it. So in writing detailed terms and conditions to avoid misunderstanding or future disputes. Registration फायदा is that I already told you, to avoid misunderstandings or future disputes, you will have this partnership deed. But suppose sir पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगा तो क्या? एक तो फर्स्ट वन, माइनर एज अ पार्टनर. यस, ही विल टेक. दक्ष का पैन कार्ड है, समझ लीजिए, दक्ष का पैन कार्ड है और वो मेरे साथ बैंक अकाउंट जो है वो मेरे साथ जुड़ा हुआ है. दक्ष का खुद के नाम पे सर पैन कार्ड, दक्ष मेरा ऑफिशियल बच्चा, मैंने पहले बता दिया था आपको, उसके आधार कार्ड पे मेरा ही नाम है. तो वो जो दक्ष जो है वो बेटा कितने साल का है? तो ही इज ऑफ 10 years old. अभी उसके पास क्या है? ही हैज अ पैन कार्ड, ही हैज डीमैट अकाउंट. ओके, डीमैट अकाउंट में उसके नाम पे यस कर सकता हूँ क्या सर? कर सकता हूँ, बट एनी लॉसेस ही इज नॉट गोइंग टू बेयर. ओके, सो इज ओनली फॉर उसके म्यूचुअल फंड भी है.
तो म्यूचुअल फंड में मैं हर महीने कुछ इन्वेस्टमेंट करता हूँ, सो दैट इन्वेस्टमेंट विल हेल्प हिम एट द टाइम ऑफ 18 ईयर्स, जब उसका फर्दर एजुकेशन होगा तो उस टाइम पे, या उसकी LIC भी रहेगी तो वो LIC आई एम टेकिंग इन हिज नेम, व्हाई, बिकॉज इज ओनली फॉर हिज बेनिफिट. So similarly, minor can be entered as a partner. See, minor can be entered as a partner, but if there are losses, then he is not eligible to do any enter into the contract. So decision whether he wants to continue with the partnership deed. उसको लगा नहीं सर मैंने उसके नाम पे पार्टनर एक होटल खोल दिया, होटल खोलने के बाद बोला कि इसमें दक्ष भी माइनर है, ये पार्टनर है, पर होटल खोलने के बाद दक्ष बोला 6 महीने के बाद सर पापा मुझे नहीं करना ये बिजनेस आफ्टर बिकमिंग 18, मुझे अलग कुछ करना है, मुझे एजुकेशन लेना है आगे और फर्दर एजुकेशन, मुझे कनाडा जाना है, मुझे US जाना है. सो इन दैट केस आफ्टर बिकमिंग मेजर he has to take decision within 6 months. Okay, so minor can be taken as partner, yes, but for the benefit of partnership, it's very simple. समझ में आ रहा है बेटा आपको, सबको समझ में आ रहा है? इट्स वेरी इजी. यस, टेल मी इट इन द कमेंट सेक्शन. इट्स इजी. ओके, समीर सिंह जी बोल रहे हैं सर आई प्रीवियस क्लासेस आई एम मिसिंग यू टू मच सर. ओके बेटा, आई ऑल्सो मिस यू. ठीक है, यस. चलिए, नो इफ देर आर लॉसेस, आई कैनॉट टेल दक्ष कि बेटा तू लॉस में अभी तू तेरा शेयर लेके आ. ओके, सो लॉसेस में हम लोग दक्ष को नहीं लेंगे, रिमेंबर दिस. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यस आदिश शाह जी. Next one. Now, what is partnership deed? If there is no partnership deed, better on this you will have some questions in your study material. If partnership deed is silent, sir, if partnership deed is silent, sir, in that case, what we are going to do? Yes, do you have some idea? If partnership deed is silent, yes, anyone will tell me. If partnership deed is silent, तो आप क्या करोगे? Yes, partnership deed silent होगा तो प्रॉब्लम को क्या? प्रॉब्लम अकाउंटिंग में क्या प्रॉब्लम है? तो अकाउंटिंग में भी प्रॉब्लम है. अकाउंटिंग में क्या प्रॉब्लम है? दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. If partnership deed is silent, in that case, what happens in accounting? But we are here not to understand law. We are here for understanding the accounting part. Law subject में law faculty will tell you in real life if there is a dispute how law how you can file any suit against that person by using the law concept, okay, by using that law sections. But accounting यहाँ पे मेरा part law के साथ ही हम लोग जा रहे हैं, but accounting हमेशा ध्यान में रखो कि हम लोग accounting समझने की कोशिश करें. पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगा तो वहां पे झगड़े करने के लिए वो जाओ ना कोर्ट में, तो उसके लिए क्या वो लॉ का माध्यम से जाना है. हम लोग अकाउंटिंग समझ रहे हैं. ओके, तो पहला पार्ट ये है कि अकाउंटिंग में हम लोग क्या करने वाले हैं, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. अभिषेक गुप्ता जी, सर आई एम फ्रॉम नेपाल. तो बेटा नेपाल में होगे तो क्या हुआ, अंडरस्टैंडिंग तो सेम ही रहेगा ना, टेंशन मत लो बेटा, आपके इधर भी यही एक्ट चलते रहेंगे ऐसे ही टाइप के. ओके, सो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर दे दिए हैं. इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, in that case, what about profit or losses? Profit or losses, you have to see equally, you have to divide interest on capital, interest on drawing, interest on loan, salary, and interest and salary paid. So these are some different situation. Profit or losses, if partnership deed is silent, and suppose I contributed 10 lakhs rupees, my friend suppose I contributed 10 lakhs, my friend contributed 6 lakhs, and another friend he contributed 30 lakhs. So I cannot say that our profit or losses will be in the ratio of capital sharing. Okay, so capital may be different, but suppose if I'm giving my 24 hours for this business, in that case I will have more profit. So beta, if it is not mentioned in the deed, then beta I cannot argue
that I will have more share because my capital is more, or might be I'm working more. In that case, profit or losses will be same equally. So it's always better. यदि ऐसा मैं नहीं बोल सकता हूँ कि मेरा कैपिटल ज्यादा है, वो एक हाथ बोलेगा अरे कैपिटल देके क्या तू क्या उपकार कर रहा है हमारे ऊपर, तो ये ऐसा नहीं रहेगा कि आपने कैपिटल ज्यादा डाल दिया, मैं बिजनेस में 24 घंटे बैठ रहा हूं, तू तो आता भी नहीं है बिजनेस में, ये झगड़े नहीं होने चाहिए बाद में, तो नहीं होना चाहिए। तो डीड जो है ना वो बना लो, डीड में रेशो डिसाइड कर लो, बस ऑन पेपर रिकॉर्ड करो। वो डीड में बोला ही नहीं, सब मस्ती मस्ती में बोल दिया चलो हाँ साथ में पार्टनरशिप करते हैं, मैं लाता 20 लाख, एक बोला 10 लाख, एक बोलेगा मैं 24 घंटे बैठता हूँ, और डीड साइलेंट है, तो सबको प्रॉफिट इक्वली शेयर करना पड़ेगा। डीड में कुछ भी लिखा नहीं है, डीड में कुछ भी लिखा नहीं है, तो आपको फिर इक्वली शेयर करना पड़ेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट वन। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जरूरत ही नहीं है, डीड में क्यों नहीं लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? नो, यू वोंट गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नाउ सी बेटा, देयर आर टू डिफरेंट वर्ड्स, अंडरस्टैंड इट क्विकली। One is a capital contribution and one is a loan contribution. See, now that you have to divide, or that you may call it as that will be a very disputable point, whether it's a capital or whether it is a loan if it is not mentioned in the partnership deed. Okay, so that is your understanding part between your partners. So how to say sir it's a capital or it is a loan? So that you have to divide, और ये आपका तीनों का और 3 पार्टनर्स है, तो आपका आपसी मतभेद नहीं होने चाहिए, इतना याद रखें। सो व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? कैपिटल एंड लोन आर टू डिफरेंट थिंग्स। कैपिटल मीन्स ओन कॉन्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल, सपोज इफ वी एग्री कि संकेत सर पैसा नहीं है उनके पास, एज्यूम करते, सो संकेत सर बोलेंगे कि भाई मैं 10 लाख लाएगा, संकेत सर बोले मैं 10 लाख लाएगा, सो संकेत सर कॉन्ट्रीब्यूशन इज 10 लाख। Assume करते हैं there is one partner Nikhil and Pritesh. Nikhil, Pritesh and Sanket sir. There are 3 partners. Nikhil sir is saying कि yes, I will contribute 5 lakhs rupees, but I will devote my 24 hours. And Pritesh sir is saying कि I will contribute 30 lakhs, but I do not have time, but I will invest my money. In that case, more than this amount will be called as loan. Okay. So that is the initial understanding, 30, 10 and 5. Now Pritesh sir is giving 50 lakhs rupees, extra 20 lakhs. That will be called as loan amount. So that will be decided among partners. That is a mutual understanding. So remember, suppose if Pritesh sir has contributed 50 lakhs and as per terms only 30 lakhs, and if there is no partnership deed, but this is a mutual understanding, so extra 20 lakhs he can demand interest on that amount. His contribution is 50 lakhs, but when they decided to contribute amount, they decided only 30 lakhs. So Pritesh sir contributed 20 lakh extra, and that contribution is called as interest on loan. On that you have to pay interest. Okay, on that you have to pay interest, but not on capital amount. So Sanket sir will not demand any amount of interest if partnership deed is silent. I am again and again talking for if partnership deed is silent. Suppose if you don't want any dispute and if you decided 12% interest rate in agreement, then it is allowed. Then it is allowed. अपने बुक्स में लिखा रहेगा, अपने डीड में लिखा होगा कि 12% देना है, तो अलाउड है। पर आपने पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है, पार्टनरशिप डीड ही नहीं बनाई है, और वो केस में आप फिर झगड़े हुए प्रीतेश सर, निखिल सर और संकेत सर में, तो वो झगड़े में कोर्ट जो है वो 1 रुपया भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देगी। एंड इवन यदि आपके पास इसका अकाउंटिंग है तो आप भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मत देना। आप इंटरेस्ट, अभी आपके पास इनका अकाउंटिंग है तो आपने ये बोल देना चाहिए कि भाई आपकी डीड नहीं है, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। ओके, क्लियर पॉइंट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, no interest on drawings if there is no deed. I am talking again and again. Deed नहीं है तो no interest on capital, no interest on drawing. पर यदि deed है तो जो करना है, deed में लिखा है तो खत्म ना, ऑन पेपर आ गया, ऑन पेपर आ गया तो कुछ नहीं करना है, फिर वो देना ही देना है।
पर ऑन पेपर नहीं रहेगा तो ये सब चीजें चलती रहेगी। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% સર, કેટલો છે? 6%. ઇન્ટરેસ્ટ ઓન લોન 6%. સેલરી નથી આપવાની, નો સેલરી, નો સેલરી સર. If you are working for 24 hours, Nikhil sir is working 24 hours, Sanket sir is working only 6 hours, and Pritesh sir is even not working. He has only contributed the amount. He is a silent partner. Okay, sleeping partner. So, sir, in that case, Nikhil sir won't demand any salary. Sanket sir won't demand any salary. If deed is silent, again, if deed is silent, if on paper you mention that he will get every month 30,000 rupees, in that case, he will earn that salary if it is written. But if silent deed, he won't get any salary. Okay? So, बाद में ये नहीं बोल सकता है डिस्प्यूट होने के बाद, हाँ हंसी खुशी हमने दे दिया, डीड नहीं बनाया, पर हम लोग उसके अकाउंट में हर महीने 30,000 ट्रांसफर कर रहे, ठीक है, पर कल उठ के झगड़ा हुआ और हमने बोला डीड नहीं बनाई थी, तुझे काई की सैलरी, तो ये कोर्ट में भी जाएगा और डीड नहीं बनाया तो केस हमारे फेवर में लगेगी यदि हमने उसको सैलरी नहीं दिया तो। हाँ, पर डीड में लिखा होगा तो कोर्ट उसके फेवर में देगी, इसीलिए एक ही सॉल्यूशन है, डीड बनाओ। ओके, झगड़ों को कम करो, पर नहीं बनाया रहेगा अकाउंटिंग करते टाइम, ये ध्यान में रखना है आपको। एंड इंटरेस्ट एंड सैलरी पेड, हाँ, और वो भी चीज याद रखो, सैलरी की भी बात की रहेगी आपने, हर महीने देते भी रहेंगे यदि फर्म प्रॉफिट में, सैलरी तो देनी ही नहीं है, पर वो भी इंटरेस्ट ऑन लोन भी तब देना है जब आप प्रॉफिट में हो, प्रॉफिट में नहीं होगे तो कहां से पैसा दोगे। ओके, सो ऑल दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ठीक है, यस सर, 20 लाख, प्रीतेश एकता तिवारी जी, प्रीतेश सर को 20 लाख के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा 100%। चलो, तो डीड के बारे में हमने बात कर ली, आई होप यू अंडरस्टूड इट। आज का होमवर्क, इमीडिएटली योर होमवर्क, आज का होमवर्क, यूनिट 1, स्टडी मटेरियल, पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, एलएलपी 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 में बाद में बताएगा आपको। Example 1. So this example you have to solve. Two examples. So this is your homework, page number 8.6. I already explained you all these provisions. Now you can easily solve this question. So this is example number 1 and this is example number 2. Example number 2 is easy. Before starting these entries, okay, so I will explain you interest on capital and all this, but better, two examples are your homework, example 1 and example 2. Any question till now? चलो जल्दी से बताओ। बेटा केशव कोठारी, इंटरेस्ट ऑन लोन तब नहीं मिलेगा यदि आपकी फर्म लॉस में है, तो ये डिपेंड करता है अभी आपकी पार्टनरशिप फर्म में, पर नहीं देना चाहिए। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, system of capital accounts. Yes, anyone? How many you already studied? Many of you have already studied this chapter in the 11th 12th standard. So can you tell me what are systems of capital account? Yes, fatafat. I want system of capital account. System of capital account, जल्दी से मुझे बताइए, how many system?
चलो, टेल मी हाउ मेनी सिस्टम्स आर देयर बेटा, फास्ट, वेटिंग फॉर योर आंसर। कौन से दो सिस्टम थे, चलो जल्दी से बताइए। फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, क्रिस्टल क्लियर टिल नाउ, ओके। नीरज कुमार जी, अकाउंट्स के लिए तो आपको कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं है। मैथमेटिक्स के लिए भी स्टडी मटेरियल और स्कैनर, ये दो बुक्स आप सॉल्व कीजिए बस, बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन एक ने पूछा था सर अकाउंट्स के लिए कौन सी बुक यूज करें, तो देर इज नो नीड टू यूज एनी रेफरेंस बुक फॉर अकाउंट्स। उल्टा मैं बोर्ड ऑफ स्टडीज के हमारे मैडम को हमेशा बोलता रहता हूँ, प्रिया मैडम अरे कितने क्वेश्चन ऐड करोगे, बस बच्चों की जान लोगे क्या, पर उससे ज्यादा क्या दोगे, मत, जरूरत ही नहीं। आरटीपी एमटीपी मॉक टेस्ट बहुत हो गया, बहुत हो गया, और फाउंडेशन लेवल नो नीड, ओके। सो देर आर टू सिस्टम्स, system of capital accounts, okay. Acha, I am telling you to write some things in your notebook. So beta, in your notebook today, what is your homework? Please maintain your notebook properly for partnership accounts. Have separate 100 pages notebook if possible for partnership accounts. It's very important chapter. You can take a screenshot of this beta. You can take a screenshot if partnership deed is silent, whatever important points you can write it, and please try to solve all questions in your notebook beta. Partnership questions, it will take 7 days, बट 7 days इफ यू आर गिविंग प्रॉपरली पार्टनरशिप अकाउंट्स के लिए, तो आपकी नोटबुक भी मेंटेन हो जाएगी और अच्छे से बाद में याद भी आ जाएगा। यस, वेरी गुड। इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। टेक अ स्क्रीनशॉट। यस विघ्नेश जी, रिविजन विल बी इन दी हिंदी and session will be in English. So beta, some WRO students, ERO students, not students, normally yes, I take revision in Hindi and lecture will be in English. So don't worry beta, Vignesh. System of capital account is very important. Okay, so let's understand system of capital account. एक second. See, system of capital accounts, एक ही मिनट बेटा। Okay, system of capital accounts, understand fluctuating capital method. Yes, many students answered it, sir, fluctuating capital method. And second one is fixed capital method. First I will tell you the logic. Yes, anyone, fluctuating capital or fixed capital? Fluctuating in which you will prepare only capital account, and in fixed capital you will prepare two accounts, capital account and current account. I will tell you the simple logic of this. Yes, our partnership, assume we have partnership Nanda Deep. Okay, so this is just a partnership firm name, Nanda Deep. Nanda Deep partnership firm, Messrs Nanda Deep, in which we are three partners, Nikhil sir, Sanket sir, and Pritesh sir. Okay,
Now what happened? Understand. Nikhil sir contributed 10 lakh. Sanket sir contributed 10 lakhs. Pritesh sir contributed 10 lakhs. On very next day, Sanket sir, he withdrew. So assume this is contributed on 1st Jan. And on 2nd Jan, Sanket sir withdrew 9 lakhs rupees. Understood. And on 29th Jan, every month, they are getting interest. Ha, beta. Sanket sir contributed 20 lakhs rupees. Now, while charging interest, so accountant charge interest on 31st of Jan for every month. Sanket sir, Nikhil sir's balance 10 lakhs. Pritesh sir balance 10 lakhs. And Sanket sir balance 21 lakhs. In spite of having 1 lakh rupee balance for 28 days and 20 lakhs balance only for 2 days, Sanket sir is getting interest on capital on 21 lakhs. सॉफ्टवेयर होगा तो कोई बात नहीं है, like banking system. But beta, now every month, same story is happening. He withdrew money on 2nd and he deposits money on 29th. Same story happened again and again, again and again, again and again. One day, Pritesh sir, he is very confused. यार संकेत क्या करता है ये? हर महीने के 2 तारीख को पैसा निकालता, 29 तारीख को लाता और उसका बैलेंस बढ़ जाता. हम लोग साला इधर 10-10 लाख रुपए डाल रहे, हमें पैसा ही नहीं मिल रहा है सर. ये हमेशा कर रहा है ऐसा. So now Pritesh sir, he studied chartered accountancy course, and in that he finds the way how to solve such questions, how to solve such trouble, maintain capital account separately and current account separately. He got the idea. He studied that partnership account from the institute material. And Pritesh sir, now he maintained 2 accounts. संकेत आजा, एक काम कर, अभी 2 accounts maintain करेंगे. Okay. So now Pritesh ने एक idea निकाला. Now what is the idea? Nikhil 10 lakhs. Sanket sir 10 lakhs on first day. Pritesh sir 10 lakhs on the first day. ठीक है. संकेत सर आए, दूसरे दिन पैसा लिखे गए. Immediately he recorded 9 lakhs on 2nd Jan. Okay. And on 20th Jan, Sanket sir deposited or he contributed capital 20 lakhs. Now Pritesh sir is saying, Sanket 2 दिन का capital है, सिर्फ 2 दिन का capital है. So I won't record here. I will record in current account. संकेत सर को ये ध्यान में नहीं आया क्या हुआ. So he deposited that money 20 lakhs in current account. संकेत सर भी बोल दिया हाँ ओके 20 लाख कैपिटल में जा रहा है ना, अकाउंट में जा रहा है ना, मेरे अकाउंट में. यस, बट वो करंट अकाउंट में, टेम्पररी अकाउंट में. एंड दिस इज परमानेंट अकाउंट. So now his capital, now see the difference. Now his capital is 10 lakhs. संकेत सर का 1 लाख, प्रीतेश सर का 10 lakhs. And in current account, remaining partner dash and Sanket sir ka 20 lakhs. After that, Pritesh sir announced one thing. He told Sanket, current account pe no interest and capital account pe there will be interest. So now Sanket sir is getting interest only on 1 lakhs and not 20 lakhs. So suppose if he has not maintained 2 separate accounts, till date,
Sanket sir got interest on 21 lakhs. But now Sanket sir will get only interest on 1 lakh, and that's why रितेश की आइडिया काम कर गई. रितेश सर की आइडिया थी कि मेंटेन कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट सेपरेटली. All temporary transactions are routed through current account, every month transactions, and all permanent transactions are routed through capital account, and that is the benefit to calculate interest. Sir, if we are not maintaining interest account, if we are not paying interest, in that case, if you don't maintain capital account and current account separately, it's okay. But whenever you are calculating interest, it's always better to maintain capital account and current account separately. तो देखो कैपिटल, एक बार रिवीजन इन हिंदी. देखो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट सेपरेटली मेंटेन करना जरूरी क्या है कि संकेत सर की जो ये 20-20 लाख रुपए लेके आते थे 28 तारीख को और इंटरेस्ट लेके जाते थे, ये जो भी मंसूबे थे ये अभी खत्म हो चुके हैं. संकेत सर को प्रीतेश सर ने रोक लगा दी है. प्रीतेश सर ने क्या किया, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स जो है वो सीख लिया और उन्होंने दो चीजें समझ ली, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट से सेपरेटली मेंटेन करने के. और जब भी संकेत सर ऐसा कुछ करते, 20 लाख लेके आते 2 दिन के लिए, तो प्रीतेश सर उसको डायरेक्टली करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते. और जब भी संकेत सर पैसा विड्रॉ करते परमानेंटली 20-25 दिन के लिए, तो वो कैपिटल में से कम कर देते. और यहाँ पे संकेत सर को जो इंटरेस्ट मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट पे मिलता है, करंट अकाउंट पे ये इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. और इसीलिए कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट ये सेपरेटली मेंटेन करना जरूरी है. जिस दिन आप इंटरेस्ट को चार्ज करते हो और यदि आप इंटरेस्ट नहीं पे करते हो, तो वो केस में आपको जरूरत नहीं है कि ये दो अकाउंट्स अलग अलग मेंटेन करने की. ओके, सो देयर आर टू मेथड्स, फ्लक्चुएटिंग एंड फिक्स. नाउ अंडरस्टैंड इट through chart. So see the logic. Now you will understand the logic that to pay interest on capital is very, very important. To pay interest on capital, fluctuating capital, only capital account is maintained, sir. Only capital account. Or here all transactions are recorded through capital account. And in fixed capital method, there are two accounts. One is capital account and second one is current account. Current account means all temporary transactions will be recorded, regular transactions, and all permanent recorded through capital account. So take a screenshot. जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिक. अंडरस्टूड बेटा? Yes, logical था पूरा. Why there are two accounts? So every month 1 lakh will be same ये इसमें होगा. Very very easy part, sir. Chलिए, let's move to next point. Now, next part is payment or expenses or income. Payment or expenses or income. Understand it. Now, if payment are related to outsiders, see, if payment are related to outsiders, there are two payments. One is related to partner. For example, partner is getting salary and office boy is also getting salary. Office boy is outsider, employee is outsider, and partner is related to firm. Okay. Sorry, related to partner and related to firm, beta. It's not fixed capital. एक second.
normally if it is related to outsider, understand, if it is related to outsider, एक ही मिनट बेटा, then you have to pay cash or you will receive cash. Okay, if transactions are related to income, you will receive payment, you will pay. Related to outsider, okay, so it is example is interest on loan to bank and payment or expenses which are related to partner. For example, interest on loan to partner, you don't have to pay every month, you will do that calculation. Suppose partner is withdrawing some amount, so instead of debit and credit to cash account, you will charge or you will add that interest in capital account. I will tell you the example through ज़्यादा जल्दी clear होगा. Assume bank, you are having two types of loan. One is a bank loan and one is loan from partner. Assume 10 lakhs at the rate of 12%, 1,20,000, 1,20,000. This interest you have to pay it in cash, or you have to pay this amount mandatory to bank. But in case of partnership firm, this interest is going to add in the capital balance. For example, Sanket sir का capital balance 10 lakhs था, Nikhil sir का 10 lakhs था, Pritesh sir का 10 lakhs. Now, this interest, suppose we have taken a loan 10 lakhs from the Pritesh sir. Loan apart from their capital contribution, 10 lakhs is capital, 10 lakhs is loan. So Pritesh sir contributed 20 lakhs. Now he is getting that interest, and that interest is, we are not going to pay it in cash or anything. That interest will be added to his capital account or current account, depending on your maintaining system. Either fluctuating होगा तो capital में add होगा, and current होगा तो fixed capital होगा तो current account में add हो जाएगा. So that will be added in current account. So this interest you don't have to pay it to the partner, but just his capital is going to increase. Okay, so that is a basic difference related to bank. If Pritesh sir wants that 1,20,000, so you can pass entry drawings account debit to cash. Okay, so his balance again will be 10 lakhs. Okay, so what entry we are passing? Number one, interest on loan account debit to partner's capital. Okay, so this is a basic difference. Interest on bank loan to bank or to cash, and here interest on bank loan to partner's capital or current account. So in one case, it is paid into the cash. So what I want to tell, एक में ये कैश में पे होता है, तो दूसरे में रिलेटेड टू पार्टनर होगा तो कैपिटल अकाउंट बढ़ते जाता है. So this transaction will increase his capital account. Remember. तो इतना ही मुझे बताना था. और यदि उसको पैसा निकालना होगा, प्रीतेश सर को पैसा निकालना होगा, तो he will pass entry drawings account debit to cash. So this is how normally entries are passed in partnership. Okay. Now, very, very, very important point. Entries, formats of capital account. Please try to understand it 100%. If your all these basic entries are clear, 60% posting you can do by your own. तो आपका मैक्सिमम पोस्टिंग ये भी हो जाएगा, ये याद रखो. So formats are very, very important. चलो फॉर्मेट्स पे ध्यान देना. नाउ यू ओनली टेल मी. चलो नाउ इट्स द टाइम फॉर क्वेश्चन आंसर्स. सो देखते हैं कौन अभी जल्दी जल्दी आंसर देते. कैपिटल अकाउंट. ओके, यस बेटा. चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और ये क्या है मैं आपको बताता हूं थोड़ी देर के बाद. चलो जल्दी से मुझे बताइए कैपिटल अकाउंट विच बैलेंस.
कैपिटल अकाउंट which balance, what is plus, what is minus? चलो चलो चलो, those who are following from the first day, what is plus, what is minus? कैपिटल अकाउंट चलो याद करो, कौन आंसर दे रहा है? यस, आई विल जस्ट चेक फर्स्ट पर्सन नेम, बेटा. इफ यू आंसर ऑल्सो, क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट. क्रेडिट प्लस, वेरी गुड. डेबिट माइनस. क्रेडिट प्लस, डेबिट माइनस. सो बेटा डेबिट इज रिड्यूसिंग कैपिटल and credit means contributing. Your capital is going to add. So what is the first point that you have to understand? Whenever you are passing entry, whenever, so see the difference between your thinking and my thinking. Whenever you are passing entry, you have to see whether it's increasing your capital or whether it's decreasing your capital. So what you have to think? Whether it's increasing your capital or whether it is decreasing your capital. You have to see that. Okay. तो चलो, सबसे पहले it's a buy balance brought down. सबसे पहले इट्स अ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. पिछले साल का बैलेंस आप अभी लेके आए. सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, वॉट एवर बैलेंस ही हैज. सो आज का पहला आंसर किसने दिया? क्रेडिट प्लस का आंसर दिया है साक्षी. साक्षी ने दिया. और मेरे स्टाइल में किसने आंसर दिया? क्रेडिट प्लस डेबिट माइनस. पूरा का पूरा करेक्ट साइड से आंसर देने वाला बंदा था साक्षी ने. सिर्फ क्रेडिट बैलेंस लिखा. क्रेडिट प्लस डेबिट माइनस लिखने वाले कौन थे सबसे पहले? तेजश्री. आज दोनों भी बाजियां मारी है. WRO, अरे वाह, आज WRO छा गए बेटा. क्रेडिट प्लस डेबिट माइनस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. सो पिछले साल का पैसा इस साल लेके आना है. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. सपोज ही पार्टनर हैज टेकन सम एडवांस. अरे पार्टनर ने एडवांस ले लिया रे. पार्टनर ने एडवांस ले लिया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. ओके, चलिए. Now you have to tell me interest on loan to partner. What is the entry? Whether capital is increasing or decreasing. First tell to yourself. First ask yourself whether capital is reducing or capital is increasing. Capital यदि increase होता है तो capital को credit देना है. And यदि capital को decrease होता है तो आपको debit देना है. So मुझे बताइए, interest on loan to partner, कैपिटल उसका बढ़ेगा. पार्टनर का इंटरेस्ट देने के वजह से कैपिटल बढ़ेगा या कम होएगा? पार्टनर को पैसा देना है या पार्टनर से लेना है? वो आंसर वेरी फास्ट. इंक्रीजिंग. रोनित बोल रहा है रिड्यूसिंग. बेटा रिड्यूसिंग कैसे होगा? सबसे पहले प्रणव खन्ना ने आंसर दिया. वेरी गुड बेटा. दिस टाइम इंक्रीजिंग आंसर बाय प्रणव खन्ना. एनआरओ स्टूडेंट ने बोला. और जो सागर कैसे रे बेटा, WRO वाले, डिक्रीज कैसे होगा? इंटरेस्ट ऑन लोन. पार्टनर ने आपको 10 लाख रुपया दिया और उसके ऊपर आप उसको इंटरेस्ट दे रहे हो. अभी इंटरेस्ट दे रहे हो तो प्रॉफिट घटेगा पर कैपिटल बढ़ेगा ना बेटा उसका. व्हाट इज द एंट्री? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट. इंटरेस्ट इज योर एक्सपेंडिचर फॉर फर्म. थिंक फ्रॉम द बिजनेस एंगल. थिंक फ्रॉम द बिजनेस एंगल. फॉर फर्म इट्स एन एक्सपेंस and partner will receive it. Therefore, partner is your creditor. Sir, first rule, partner is our creditor for this entry. So interest account debit to partner's capital. So entry will be by interest on loan to partner. Entry is very easy, by interest on loan to partner. Okay. So his capital is increasing. So those who answered wrong, बेटा ठीक है, पहली बार आंसर रॉन्ग दिया. आपको क्या सोचना है? आपको क्या सोचना है कि मुझे उसको पैसा देना है. आई एम अ फर्म. मैं फर्म के अकाउंटिंग कर रहा हूं. फर्म के अकाउंटिंग में क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन लोन इज माय एक्सपेंडिचर. इंटरेस्ट ऑन लोन इज माय एक्सपेंडिचर. तो इंटरेस्ट को डेबिट होएगा. एंड पार्टनर लोन को क्या होएगा? पार्टनर लोन बढ़ेगा. पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा. सर पार्टनर को पैसा देना है. पार्टनर को पैसा देना है तो हिज अवर डेटर नहीं है, वो हमें पैसा देना है. हिज अवर क्रेडिटर. सो कैपिटल को क्रेडिट करेंगे. हिज अवर क्रेडिटर. ओके. सो हमें पैसा देना है. सो एंट्री विल बी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू capital account. Interest account debit to partner capital account. Interest account debit to partner's capital account. Okay. नहीं बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन, सर्चप्रीत जी, लोन अकाउंट इज डिफरेंट. इंटरेस्ट ऑन लोन के वजह से कैपिटल बढ़ता है. क्या होगा? हमने उसको पेमेंट नहीं किया इसीलिए हमने एंट्री क्या किया? बाद में पेमेंट करने वाले, तो उसका कैपिटल बढ़ा देंगे. क्या बढ़ा देंगे? लोन नहीं बढ़ाएंगे, उसका कैपिटल बढ़ा देंगे. ऐसा एंट्री होता है. आया समझ में? यस, वेरी गुड बेटा. सर्चप्रीत कौर बोल रही है सर लोन में भी ऐड हो सकता है. यस, हो सकता है लोन में ऐड.
पर नॉर्मली हम लोग लोन की अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट ही रखते हैं पार्टनरशिप केस में 20 लाख रुपया, और वो जो इंटरेस्ट है उसको देने के बदले में उसका कैपिटल बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं? उसका कैपिटल बढ़ा देते हैं। ये चीज याद रखो। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। से सर्चप्रीत ने बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछा। यस, सो बेटा इंटरेस्ट लोन में ऐड करते क्या? नहीं करते। इंटरेस्ट क्या करते? कैपिटल में बढ़ा देते इन रियल लाइफ। चलो सेकंड क्वेश्चन, कैश कैपिटल इंट्रोड्यूस। कैपिटल इंट्रोड्यूस सर, वेरी सिंपल एंट्री, कैपिटल इंट्रोड्यूस कैश अकाउंट डेबिट। बेटा गुंजन ने भी पार्टनर के एंगल से क्यों सोचना है? वी आर थिंकिंग फ्रॉम द एंगल ऑफ पार्टनर्स या वी आर थिंकिंग फ्रॉम द एंगल ऑफ बिजनेस? वी आर मेंटेनिंग सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, लीगल एंटिटी। तो यस, हियर वी आर मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ बिजनेस, नॉट पार्टनर। पार्टनर का इनकम क्यों देख रही है तू? गुंजन देवी, थिंकिंग इज गलत, wrong thinking. Okay, so your thinking is that you are passing entry in the books of partner. No beta, we are passing entry in the books of firm. Firm is different from partner. Okay, so cash is increasing. Okay, so cash comes in into the business में आया, and capital is credited. So beta यहाँ पे buy cash, यहाँ पे buy cash. Visualize this. So this is the additional capital. And suppose he withdrew capital, then capital gets reduced. So capital account debit to cash or drawings. Drawings की में एंट्री ऐसी होती है, drawings to cash और drawings cash होता है, और बाद में capital to drawings. So what happens? Why drawings account is maintained? That I will tell you separately. Hello, 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 hello. हेलो, आ रहा है अभी? इट्स ऑडिबल? ओके, सो सेकंड एंट्री विल बी, अच्छा माइक प्रॉब्लम हो गया है कुछ तो कैपिटल ड्राइंग्स अकाउंट को एंट्री करेंगे, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, एंड सेकंड एंट्री विल बी हाँ, सो यू हैव टू ऑप्शन, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री एंड देन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग। सो ड्राइंग बैलेंस विल गेट कैंसल, तो ड्राइंग कैंसिल होने के बाद ये एंट्री होगा, इतना याद रखो। ड्राइंग विल हेल्प यू आउट to understand amount which is withdrawn from the business. Okay, so it's always better whenever you are withdrawing amount, so instead of giving debit to capital account, you will debit ड्रॉइंग्स अकाउंट। आपने किसको डेबिट देना चाहिए? ड्रॉइंग्स अकाउंट को आपने डेबिट देना चाहिए, दैट विल बी इजी। ओके, चलिए नेक्स्ट वन। ओके, so you have two options, capital account debit to cash, and second option is does drawings to cash and then capital to drawings, capital to drawings। third entry, प्रॉफिट और लॉस ट्रांसफर। सो इसमें फर्स्ट वन, प्रॉफिट और जनरल रिजर्व ट्रांसफर, प्रॉफिट और जनरल रिजर्व ट्रांसफर। यस, नाउ यू ओनली टेल मी, थिंक प्रॉपरली, थिंक लॉजिकली। प्रॉफिट ट्रांसफर, प्रॉफिट को ट्रांसफर किया गया सर, तो क्या एंट्री होगा? जल्दी से बताइए, प्रॉफिट को ट्रांसफर किया,
पार्टनर्स कैपिटल को प्रॉफिट को ट्रांसफर किया। कौन आंसर दे रहा है सबसे तेज? एंट्री के साथ चाहिए मुझे। Very good. Capital is increasing. So entry is profit and loss account or general reserve account debit to partners capital account. So partners capital account को क्रेडिट होगा और सबसे पहले आंसर दिया है साउथ के आदित्य दर्शन जी। आदित्य दर्शन जी। Very good. So entry is profit or loss. Capital will get increased. So capital will get increased here by P&L. Profit transfer. By P&L profit transfer. और बाय जनरल रिजर्व प्रॉफिट के साथ साथ जनरल रिजर्व ट्रांसफर। जनरल रिजर्व ट्रांसफर। So general reserve account debit or P&L account debit balance becomes zero. General reserve balance becomes zero and capital is increasing. Capital बढ़ जाएगा. So general reserve का balance zero हो जाएगा. P&L का balance zero हो जाएगा and capital account बढ़ जाएगा. So you are transferring your profits to your partner. Ultimately, that profit or general reserve is of partners only, and that's why we transfer it to partners capital. See, in case of company, in company final accounts, I will teach you, you can't transfer that profits or general reserve to your shareholders. Okay, it has to be maintained separately. Okay, reserves and surplus maintained separately, capital maintained separately. But in case of partnership, you can transfer your profits to your partners capital account. आप आपका profit partners को transfer कर सकते हो because ultimately owners वही है. पर in case of company, schedule 3 ये बोलता है कि आप ऐसी चीज नहीं कर सकते हो. कैपिटल और प्रॉफिट ये अलग अलग ही मेंटेन करना पड़ेगा. इतना याद रखिए. नेक्स्ट वन, लॉसेस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L. सो लॉसेस के केस में कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट. इट्स वेरी सिंपल सर. कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L. सैलरी कमीशन रेम्यूनरेशन पेएबल टू पार्टनर. चलो जल्दी से बताइए. सैलरी, थिंक फ्रॉम द फर्म्स एंगल. सैलरी कमीशन रेम्यूनरेशन फर्म के लिए क्या होगा और पार्टनर को देना है या पार्टनर से लेना है. देना है तो क्रेडिट होगा, लेना है तो पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट होगा. So they are our creditors or they are our debtors. Think properly. Think properly. Entry बताइए. Entry. I want entry. Just don't tell me credit side or debit side. भार्गवी आप डेबिट साइड बोल रहे हो क्या? डेबिट साइड गलत हो सकता है, ये आप पूरा एंट्री बताइए इससे अच्छा. थिंक प्रॉपरली बेटा भार्गवी. इंप्रूव योर थिंकिंग लेवल. वेरी गुड. सो सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी इज क्रेडिट. अरे ईशा पंडित क्या अकाउंटिंग कर रहे हो बेटा? आप तो धज्जियां उड़ा दी आपने अकाउंटिंग के. सैलरी इज क्रेडिट. बेटा कैसे रहे? सैलरी इज आवर एक्सपेंडिचर, commission is our expenditure, remuneration is our expenditure, expenditure account debit, and we have to pay it. Okay, so partner is our creditor, partner को देना है, so his capital is increasing, so two partners capital. Salary, commission or remuneration account debit to partners capital. See the entry, salary, commission or remuneration account debit to partners capital account. It's very, very simple, sir. Very, very simple. Next entry, by salary, commission or remuneration. Next entry, but why you are passing such type of entries मुझे समझ में नहीं आता कि आप सैलरी को, ये खर्चा है. थिंक प्रॉपरली. सैलरी खर्चा है, पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा क्योंकि हमें उसको पैसा देना है. देना है तो इज अवर क्रेडिटर. क्रेडिटर मतलब क्रेडिट प्लस डेबिट माइनस. इतना सिंपल है यार. थिंकिंग डेवलप करना पड़ेगा पार्टनरशिप में, पहले ही बोल देता हूं. इफ यू डोंट डेवलप योर थिंकिंग इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. These entries are very, very important. Every problem you will find these entries. तो जो भी स्टूडेंट्स ये आंसर रॉन्ग दे रहे
Please improve your thinking. प्रियंका झा, क्या आंसर दे रहे हो बेटा? पार्टनर्स कैपिटल टू सैलरी, अरे सोच के तो बताइए. सैलरी खर्चा इनकम है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. इफ यू डोंट अप्लाई योर बेसिक लॉजिक, if you are not clear with your traditional approach, how you are going to survive it in this accounting world? Whenever you are passing any entry, before passing any entry, first think on that, whether this is our expenditure, whether this is our income. Expenditure, debit balance, apply rules of accounts, traditional rules. Debit the data, credit the credit. एक 10 दिन में गया क्या? आप तो एंट्रीज ही भूल गए. मुझे बहुत गुस्सा आता है यदि ऐसा एंट्री आप कर रहे हो तो. एट द एंड ऑफ दिस सेशन, पार्टनरशिप के एंड में हो और आपका बेसिक्स मैंने कवर करवाया है, पूरा बेसिक्स. डेवलप यूर थिंकिंग यार. मैंने आपके बेसिक्स कवर किए. अभी प्रियंका झा बोल रही है सॉरी, बट बेटा बिफोर पासिंग एनी, वी आर डूइंग सीए कोर्स. We are in that 25%, those who are going to pass. We are not in 75%, those who are going to fail. And why students are getting failure? Because they are just by hearting all these entries. They just want to learn all these entries without logic. मगअप करो और फिर सीए कोर्स की इज्जत निकालते हो. अरे कोई भी कोर्स में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स ये लॉजिकल होते हैं. और यहाँ पे जितने भी लोग हैं, हम लोग, अब किसी भी सीए को भी पूछोगे तो वो क्लियर इसीलिए हुए हैं क्योंकि उनके लॉजिक्स आर 100% क्लियर. मैं बोल नहीं रहा हूं 100% क्लियर होंगे, पर एटलीस्ट ट्राई टू अप्लाई दिस लॉजिक. आपको किसी ने सिखाया हुआ है, ट्रेन किया हुआ है. एंड इफ यू आर ट्रेनिंग हिम कि सैलरी को क्रेडिट दिया, किसको गुस्सा नहीं आएगा? चलो कोई बात नहीं. आई होप एवरी टाइम यू विल अप्लाई दिस लॉजिक. सर करंट अकाउंट भी हो सकता है? यस, हो सकता है. Interest on capital, I have written there, interest on capital is expenditure. So interest on capital, suppose you contributed capital 20 lakhs, so you are asking for interest. If deed is there, you can pay it. So interest on capital is your expenditure and your partner's capital is getting increased. So interest on capital account debit to partner's capital account. So buy interest on capital. Interest on drawings. Now drawings, suppose partner is withdrawing amount every month and excess amount is withdrawing. So we will charge him interest. So what is the entry for interest on drawing? Yes. Now you only tell me. Think logically. Interest on drawing, beta. Now, Jha madam, please, Priyanka Jha, please, I don't want wrong entry from your side. What is the entry for interest on drawings? चलो चलो जल्दी बोलो यार, फटाफट बोलो, फटाफट बोलो. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या एंट्री क्या होएगा? जल्दी से बोलने का, रुकने का नहीं, टाइप करते रहने का. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री क्या होगी? तो चलो यार एनर्जी लो थोड़ा, फास्ट. कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स नहीं होता है. कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूरा लिखो. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू पार्टनर्स कैपिटल. कौन लिखा? ये मिस प्रियंका. प्रियंका नाम में ही प्रॉब्लम दिख रहा है मुझे. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख के दिया मैंने वहां पे. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज अवर इनकम and your capital is getting reduced. So capital account debit to interest on drawings. Capital account debit to interest on drawings. So interest on drawing ये डेबिट में जाएगा कैपिटल अकाउंट के. अरे कैपिटल पैसा लेना है ना पार्टनर से पैसा लेना है तो इज अवर डेटर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज अवर इनकम. थिंक लॉजिकली प्रियंका. नो शी इज नॉट प्रियंका झा, शी इज समवन डिफरेंट. मिस प्रियंका थी. सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. आई डोंट नो regarding your logics, but ठीक है, गलत एंट्री भी दे रहे हो एटलीस्ट दीजिए. सो आई विल रेक्टिफाई यू. ओके, सो इफ यू आर गिविंग रॉन्ग एंट्रीज इट्स ओके. थोड़ी गालियां खा लोगे बट इट्स ओके बेटा, डोंट वरी, बट इट विल इंप्रूव योर थिंकिंग लेवल. सो वट एवर इट बी,
Please give answers. Interest on drawing, capital account debit to interest on drawings. Very good. Partners capital और partners current account debit. He is our debit giver. Debit giver होता है क्या कभी? भूमिका डेबिट गिवर होता है कभी? या डेबिट द अरे बेटा यहाँ पे किधर भी रिसीवर गिवर का रिलेशन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ डेटर क्रेडिटर का रिलेशन है. Here there is no receiving giving relationship except if you are paying cash. Either he will be a debtor or he will be a creditor. Now interest on drawing, partners capital से पैसा आएगा, so he is our debtor, okay, and interest is our income. We are taking money from him. ड्रॉइंग्स अमाउंट का पैसा ले रहा है वो, तो उसको इनकम इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा. सो ही इज अवर डेटर. सो बेटा भूमिका लिखने गई रूल और रूल गलत लिख दिया भूमिका आपने. कौन सा रूल है? हर चीज में डेटर आइदर ही विल बी अ डेटर और ही विल बी अ क्रेडिटर. सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो भी डेबिट वाले है ही इज अ डेटर एंड क्रेडिट वाले जो है वो ही इज अवर क्रेडिटर. रूल भी गलत अप्लाई करते हो. टेकन ओवर, एनी एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर. ओके, so partner has taken some asset from you, from the business. business से asset उठाया, business से asset उठाया. बेटा डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर का रूल यहाँ पे अप्लाई ही नहीं होने वाला है. मैं पहले ही बोल देता हूं, यहाँ पे सिर्फ एक ही रूल अप्लाई होगा, डेबिट द डेटर क्रेडिट द क्रेडिटर. एसेट टेकन ओवर, एसेट किसी ने पार्टनर ने क्या एसेट उठा लिया, पार्टनर हैज टेकन सम एसेट. So asset goes out from the business. So asset को credit होगा and partner will pay us afterwards. Okay, so we have to pay, take this money from the partner. So we have to take this money from the partner. So partner is our debtor. Okay, so partner is our debtor. So partner's capital account debit to asset. So to asset. And if liability is taken, exactly ulta, liabilities will get cancelled. So liabilities account debit to, we have to pay him. So he has taken some liability. So we will pay him back. So liability account debit to partner's capital account. So liability account debit to partner's capital account. So this is your partner's capital account. So now you can take a screenshot of this. And I want these entries, partner's capital account. Everyone see buy balance brought down or to balance brought down. Please remember this pro forma, interest on loan. This will help you out for solving questions. चलो जल्दी से pro forma याद कर लो before taking a break. How to recall these entries? See whether this is an expenditure or this is an income for the business, and whether we have to pay it or whether we have to collect it from the partner. So entries are very easy. After understanding final accounts, after understanding non-profit organization, if you are passing entries, debtor creditor relation ही नहीं समझ में आ रहा है, non-profit organization रहेगा या कुछ भी रहेगा, कोई भी chapters है basics के, first merit, journal, ledger, trial balance, ये topic होने के बाद भी if you are not answering, this is the highest level difficult topics यार. This is all A+++ category topics. NPO, final partnership, and your company final accounts. These chapters, in which maximum basics understanding, ये तो मैं assume करके चल रहा हूं. Now your basics are improved. तो basics तो improve करना पड़ेगा ना बॉस. Take a screenshot. हो गया क्या? Interest on loan. Interest on loan is interest on loan account debit expenditure for the business. We have to pay it to partner, so he's our creditor. So interest on loan account debit to partner's capital. ये added capital contribution. So यहाँ पे आपकी एंट्री क्या होगी? कैपिटल कंट्रीब्यूशन को यस आप एंट्री क्या करोगे? यहाँ पे ऊपर देखो, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. P&L को ट्रांसफर किया, P&L अकाउंट आपका जीरो हो जाएगा. P&L अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. जनरल रिजर्व को ट्रांसफर किया, जीरो कर दिया. जनरल रिजर्व को जीरो किया मतलब रिजर्व को क्रेडिट बैलेंस होता है उसको डेबिट दिया, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन, these are our expenditure. So salary account debit to partners capital account. Interest on capital is our expenditure to partners capital. Liability taken over by the partner, liability is getting cancelled, so liability को credit balance था उसको debit दिया and partners को हमें वो पैसा देना पड़ेगा, so his capital is a creditor. ऐसा एकदम स्पीड में बोलना पड़ता है बॉस. चलिए कोई बात नहीं. I hope you enjoyed this till now. So take a break. ब्रेक में जाने के पहले आपको एक ही चीज बताता हूँ, पूरे एंट्रीज को अच्छे से याद कर लीजिए. अच्छे से याद कर लीजिए तो ज्यादा फायदा होगा.
सो बेटा दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड बिफोर ब्रेक. ब्रेक के बाद तुरंत सीखेंगे P&L appropriation versus P&L account. Okay, if you have any question till now you can ask me. प्लीज ब्रेक में पूरा रिवाइज कीजिए ऑल दीज एंट्रीज टुगेदर विथ माय स्पीड. मेरा स्पीड जो है उसी को याद करते हुए और बेसिक्स को याद करते हुए पूरा याद करना ब्रेक में. एनी डिफिकल्टी टिल नाउ? एनी डिफिकल्टी? Why we write to balance brought down? Beta, if advance is taken by the partner, suppose if he has a debit balance, suppose उसने 1 lakh withdraw किया excess amount. Yes, if he paid us money, ठीक है. But sometimes what happen? Suppose for personal use he withdrawn in excess of his capital. तो बेटा उसका कैपिटल 10 लाख था और उसने 12 लाख विड्रॉ किया बिजनेस से, और दूसरे पार्टनर बोले ठीक है ना बिजनेस से पैसा लिया 2 लाख बाद में दे देना, तो 2 लाख रुपए जो उसने एक्स्ट्रा विड्रॉ किया, दैट इज अ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इफ एडवांस इज टेकन बाय द पार्टनर. Understood? Good question. If advance is taken by the partner. बेटा ये लोन लिया था फर्म ने, रोनित हल्दर जी, ये लोन लिया था. अरे भार्गवी, डेबिट इज इनकम और क्रेडिट इज एक्सपेंस, ये क्या रूल अप्लाई कर रही है तू? चलो यार कुछ बोलने का ही नहीं. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, से तू एग्जैक्टली उल्टा रूल अप्लाई कर रही है. डेबिट इनकम एंड क्रेडिट एक्सपेंस लिखा है तूने. भार्गवी डोंट वरी, लिखो कुछ लिखना है वो लिखिए. दिस इज अ फ्लक्चुएटिंग सिस्टम. बेटा दिस इज अ बेसिक प्रोफॉर्मा. This is a basic pro forma. Goodwill adjustment, beta Gunshita ji, still we are not covered. Goodwill adjustment, this is a basic pro forma. All basic entries जो डे टू डे लाइफ में आते हैं. गुडविल रोज आता है क्या? Goodwill adjustments are not regular adjustments. Okay, so this is monthly adjustments. Interest on loan देना, cash withdraw करना, cash लाना, profit को transfer करना. These are regular entries, and that's why we studied in the introduction part. So goodwill adjustment we are going to see it. Don't worry. Goodwill adjustments are afterwards. Okay. Sure. Okay, take a break.
चलो बेटिया, yes, first one. Now I am going to ask you some entries for next 5 minutes. 5 मिनट की एंट्रीज हम लोग देखते हैं और आफ्टर 5 minutes वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद P&L वर्सेस P&L एप्रोप्रिएशन. तो चलो जल्दी से मुझे बताओ. सो फर्स्ट एंट्री टू यू related to partnership. Entry number 1, सैलरी, रेम्युनरेशन और कमीशन. चलो जल्दी से बताओ. सैलरी, रेम्युनरेशन, कमीशन. सैलरी, रेम्युनरेशन, कमीशन. हु इज गोइंग टू आंसर इट? 5 एंट्रीज पूछेगा मैं. 5 एंट्रीज. हाँ बेटा, आदिश, यू आर करेक्ट. सैलरी और ये नहीं रहता. सैलरी पे कैसा इंटरेस्ट देगा बेटा? सैलरी पे कोई देता है क्या इंटरेस्ट? कुछ भी बोलते हो बेटा. आदिश, हु इज आंसरिंग फर्स्ट? उस्मान भाई. उस्मान भाई फ्रॉम SRO. फर्स्ट आंसर बाय SRO. सेकंड वन. सेकंड क्वेश्चन. Interest on drawings. Interest on drawings. Interest on drawings. Interest on drawing. यशिका बोल रहे 6%. अरे बेटा पैसा नहीं पूछा है मैंने आपको. सेकंड आंसर बाय NRO स्टूडेंट हिमांशु पाठक. Capital account debit to interest on drawings. Correct. Capital account debit to interest on drawings. Number 3. Next one. Next entry. Asset taken over by partner. Asset taken over by partner. हाँ बेटा, एकोमोडेशन बिल में बिल इज एंडोर्स. नहीं, फिर नहीं पे करेगा मानवी. Partners capital account debit. Very good. Partners capital account debit to asset. Fastest answer by Divesh. And after that Himanshu. Both are from NRO. Capital account debit to asset. प्रणब पान. प्रणब जी आप ही सोचिए, एसेट गोज आउट और कम्स इन. नेक्स्ट एंट्री. कैपिटल अकाउंट टू एसेट हो गया है. दिस इज ए कैपिटल टू एसेट. नेक्स्ट एंट्री. जनरल रिजोर्ट ट्रांसफर्ड. जनरल रिजोर्ट ट्रांसफर्ड.
जो बिना सोच के एंट्रीज करते ना बेटा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा प्रणब जी, ऐसी गलतियां होनी नहीं चाहिए। 2+2 में गलती होती है कि आपकी, तो अकाउंट्स में क्यों गलती होती है रूल्स अप्लाई करने में? नाउ यू आर सीए स्टूडेंट्स बेटा, वी कांट अफोर्ड सच मिस्टेक्स। कुमारी फ्रॉम एनआरओ, एनआरओ ने आज जून लगा दी है। एनआरओ, नॉट ईआरओ, नॉट डब्ल्यूआरओ, ओनली एनआरओ। एंड फर्स्ट आंसर बाय एसआरओ। अदर स्टूडेंट्स पता नहीं मुझे, डब्ल्यूआरओ वाले तो सो गए लगता है। इतने आराम से एंट्रीज दे रहे हैं। आदिश शाह, डब्ल्यूआरओ, एकदम आराम से एंट्रीज दे रहा है। एनआरओ कहां से कहां चले गए। नेक्स्ट वन, लास्ट एंट्री, liabilities taken over by partner, liabilities taken over by partner। फैजान तो क्या एंट्री दे रहा है बेटा, जनरल रिजर्व को क्रेडिट किया, वेरी गुड बेटा, क्या दिमाग लगाया है फैजान जी। कहां से हो? डब्ल्यूआरओ, करो नाम रोशन और करो। जनरल रिजर्व को जीरो करना है, कैपिटल को बढ़ाना है, क्या एंट्री सोचते हैं आप ही को पता, ठीक है। गलत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वो आंसर वेरी फास्ट। ईआरओ सही है माँ, क्लियर कट विनर एनआरओ, टुडेज विनर आर एनआरओ। तो एनआरओ के लिए तो क्लैप बनता है बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, एंड 3 डिफरेंट स्टूडेंट्स हु आंसर्ड इट। ठीक है, चलो, एटलीस्ट मेनी स्टूडेंट्स ट्राइड इट। दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट आंसरिंग, I will request you all, if you answer, if you face me, my questions, you are going to pass in CA exam. If you face my face to face के लेक्चर वाले जो मुझे फेस करते वो तो बहुत डरते, पर आप सपोज मेरे आंसर्स देते हो ऑन रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑल्सो, तो आप बहुत बढ़िया प्रोग्रेस करने वाले हो, ये समझ लेना, ठीक है। लाइबिलिटी टू पार्टनर्स कैपिटल, इट्स ओके। चलो, नाउ आई विल मूव टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज द P&L and P&L appropriation. P&L and P&L appropriation. In next session, I'm going to start with today. You have to understand all the basic concepts. P&L and P&L appropriation. Understand it. What is the difference? So format तो आपने copy कर लिया. Format of partners capital account. Now this is the last one. P&L and P&L appropriation. And then we are going to see what is the logic of interest on drawings. That is the last part of this unit. So P&L and P&L appropriation, let's understand it quickly. So till now, what is we have understood, that is what is partnership deed silent होगा तो क्या होगा, that is the important point. And second one, entries which are related to partners. Now what is the difference between P&L and P&L appropriation? All compulsory expenses, all compulsory expenses, that is for example salary which is paid to outsiders, or rent you are paying to outsiders. So partner related, all in P&L appropriation. Partner related expenses or income, and outsider related expenses or income other than partner, that is outsiders, are transferred to P&L account. For example, see, it has a credit balance only, that I will tell you exactly P&L appropriation, how entries are going to pass. Understand it quickly. Final accounts already done, तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा. So what is the entry? See beta, we pass entry salary account debit to salary payable, correct, or bank. Normally salary payable, that person name is important. Now this salary is our expenditure. Now this expenditure is a nominal account, therefore we pass entry P&L account debit to salary. So salary account is getting cancelled. If I open this salary account, it is not
outstanding, so it is not balance sheet. So see beta, it is not balance sheet item, it's a P&L item. Salary is a nominal account. Salary is a nominal account. So what is the entry? Salary to either bank or it is a payable. And at the end, we transfer it to P&L. If I open P&L account, you can visualize this to salary account. If I open P&L account, so we debited salary. P&L salary के credit में P&L चा debit ला. It's very simple. Now, in case of partnership, salary account debit. So instead of payable, we record to partners capital account. Where we record to partners capital account. Already you know the entry. And this is partner related salary. So we transfer it not to P&L account, but we transfer it to P&L appropriation account. So instead of P&L, if this salary is related to partner, then it is P&L appropriation. So these are transparent. So what is P&L appropriation? See, after P&L, as you are aware, here you are writing all incomes, all income here you transferred. Here you transferred all expenses. And here you are getting net profit. Sir, already studied in final accounts. Now, after, suppose this net profit is 1 lakh. And after that, you will open P&L appropriation. What you are going to open? P&L appropriation. Now, this P&L appropriation is related to partner's income and partner expenditure. Sorry, income for the firm. Income for the firm. But related to partners. For example, by net profit, I will write here, by net profit 1 lakh, which I transferred from P&L account. Now, from partner, what you are going to receive? Income. Income is by interest on drawings. Okay. Income, beta. Don't write drawings. Drawings is not correct. Drawings is amount which is withdrawn. This is income. Drawings is amount withdrawn. This is interest on drawing. देखो drawing अलग है और interest on drawing अलग है. So हम लोग drawings capital को जाएगा. Drawings किसको जाके मिलेगा? Capital को. और interest on drawing किधर जाएगा? P&L appropriation. Here salary to partner. This is all rent to partner. Then you have interest on capital. Then you have interest on loan. So see beta, interest on loan to partner, everything which is your expenditure, firm's के angle से expenditure, and which are payable to partner, that will be transferred to P&L appropriation. So P&L appropriation account is open for writing off or transferring expenditure which are related to partner. So tell me it in comment section what you understood. एक बार मैं हिंदी में बता देता हूं. देखो बेटा, एक्सपेंडिचर और इनकम हम लोग लास्ट में P&L में ट्रांसफर करते हैं. जो भी आपको समझाए, आप एक बार जिनको भी समझ में आया वो P&L एप्रोप्रिएशन और P&L का डिफरेंस मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में. सो टेल मी इट इन कमेंट सेक्शन एंड जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग इन द हिंदी. सो देखो, P&L अकाउंट जो होता है, P&L अकाउंट जो होता है वो कोई भी खर्चा और इनकम विच इज नॉट रिलेटेड टू पार्टनर. मतलब मैंने सैलरी पे किया, रेंट पे किया, पर किसको? नॉट पार्टनर. पार्टनर को नहीं पे किया, मैंने आउटसाइडर को पे किया. सैलरी मेरे बंदे को पे किया जो मेरे पास काम करता है, वो पार्टनर नहीं है, ऑफिस बॉय है या कोई भी रहेगा, मेरा हेल्पर है या मेरा उस्ताद है, तो उनको मैंने पेमेंट किया होगा, तो ये क्या करेगा? मैं P&L के डेबिट में मारेगा. और मुझे जो भी इनकम होने वाला रहेगा वो आउटसाइडर से रिलेटेड, वो P&L में जाएगा. तो P&L एप्रोप्रिएशन इसलिए मेंटेन किया जाता है ताकि आपको जो भी खर्चे पार्टनर से रिलेटेड है, पार्टनर से रिलेटेड मतलब पार्टनर्स आर ओनर्स, तो उनसे रिलेटेड होगा तो P&L एप्रोप्रिएशन में जाएगा. P&L एप्रोप्रिएशन को हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होता है, क्योंकि प्रॉफिट होगा तो ही. P&L एप्रोप्रिएशन में कभी भी लॉस नहीं होगा. लॉस क्यों नहीं होगा? लॉजिक इज वेरी सिंपल. लॉस हुआ तो अल्टीमेटली कौन बेयर करने वाला है? पार्टनर ही बेयर करने वाले हैं. तो P&L एप्रोप्रिएशन को हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, पर P&L को डेबिट बैलेंस होने का भी, लॉस होने का भी चांस है. कभी कभी लॉसेस भी होते हैं, पर P&L एप्रोप्रिएशन में कभी भी लॉस नहीं होगा. और लॉस हुआ तो वो अल्टीमेटली किसको बेयर करना है? तो पार्टनर को ही बेयर करना है. तो इससे अच्छा लॉस होने ही मत दो. तो P&L एप्रोप्रिएशन को कभी भी क्रेडिट ही ज्यादा बैलेंस होगा, डेबिट कभी ज्यादा आएगा ही नहीं.
सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी खर्चे रिलेटेड टू पार्टनर हो गए, सैलरी होगा, रेंट होगा, पार्टनर्स को देने का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा या इंटरेस्ट ऑन लोन होगा, वो इधर डेबिट में आएगा, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा तो क्रेडिट में आएगा। बच्चे क्या करते हैं, ड्राइंग्स को क्रेडिट में डाल देते हैं। बेटा ड्राइंग्स को क्रेडिट में नहीं डालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट में डालना है। ड्राइंग मतलब पैसा विड्रॉ करना, पैसा विड्रॉ किया, ये कोई लॉस और प्रॉफिट नहीं है बिजनेस के एंगल से, ये कोई इनकम और एक्सपेंडिचर नहीं है। हाँ, पर ड्राइंग्स के ऊपर का इंटरेस्ट ये इनकम है फर्म का, तो उतना आपको याद रखना है कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर विच आर रिलेटेड टू पार्टनर ये जाने वाले हैं, और पी एंड एल में क्या जाने वाला है, पी एंड एल में जो जनरल खर्चे इनकम है वो पी एंड एल में जाने वाला है। सो दिस इज ऑल फॉर पी एंड एल एक्सपेंडिचर। सो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन एंड पी एंड एल के बीच में क्या डिफरेंस है, यू गॉट द डिफरेंस, वेरी गुड बेटा श्रीनिधि। नो प्रॉब्लम बेटा। Appropriation means distribution, and this distribution is related to partner. No beta, net loss will not be there in P&L appropriation. P&L appropriation में हमेशा credit balance से आएगा by profit से। Appropriation, हाँ बेटा, जो भी पार्टनर से रिलेटेड है वो पूरा P&L appropriation में जाएगा। P&L is related to outsiders. हाँ, प्रतिज्ञा विधाती is answering, P&L is related to outsiders and P&L appropriation is related to partners. Parents हो गया बेटा आपका गलती से, parents नहीं होता है, partners होता है। क्या होता है, पार्टनर्स होता है। वेरी गुड, ओके। सी बेटा, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट once in English. P&L account and P&L appropriation. P&L account is better related to partners. Sorry, P&L account is related to outsiders. Related to outsider means, for example, I'm paying rent to my landlord. Landlord is not my partner. Therefore, I will pass entry rent account debit to bank, and that rent I will transfer it to P&L account. Where to transfer it? P&L account. But suppose if I'm using the premises of the partner and if I'm paying any rent to him, it's not actually paying him, but it's an outsider. Sorry, it's a my owner. Owner is only a partner. In that case, I will transfer, instead of preparing P&L account, I will transfer that rent to P&L appropriation account. So P&L appropriation account debit to rent. So P&L appropriation is nothing but it is a distribution of your profit, and then you will write all expenditures and incomes which are related to partner. So all expenditure and incomes which are related to partner, that will be recorded here. All expenditures are debited and all incomes, only interest on drawing will be there as income. So interest on drawing will be credited. And remember here, credit balance is whatever profit now here, it will be transferred to partner's capital. Loss is there. Normally 99% losses are not there. 1% कोई लोग बेटा डाल भी सकते हैं एग्जाम में, पर मैं आपको बता रहा हूँ लॉसेस नहीं होंगे, क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। सो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, नॉट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो P&L एप्रोप्रिएशन में हमेशा प्रॉफिट ही आना चाहिए। ओके, if loss is there, ultimately it is transferred to so these are transfer entries. P&L, yes, already you studied it in the final account. P&L is nothing but it's a transfer entries, transfer statement. All expenditure and income, we transfer it to P&L account, and all personal and real account, we carry it to balance sheet. So all nominal accounts are transferred to P&L, all personal and real account are carried to balance sheet. Okay. And now last one. Interest on amount which is withdrawn by the partner. Interest on amount withdrawn by the partner. Now see, I will tell you the concept. Last concept, beta. Drawings. Now see, drawings calculation, I already told you in the account current chapter, interest on drawings, but there is one shortcut. Suppose if every month, January, Feb, March, April, May, June, July, August, September, October,
November, December. Okay. Every month he's taking 10,000 rupees. So on till December. Now in the first month, assume interest rate is 12%. So he's drawing this amount on 1st of Jan. On 1st of Jan. So how many months interest I will charge him? Full year. So this is 12 by 12. 12% is per annum. In second year, it will be, second month, it will be February, May, 11 months. On the 1st of Feb, if he's withdrawing money, so I will charge him interest for 11 months. Similarly, going on 10 by 12. And in last month, it's a 12%. It is 1 by 12. So 1st December to 31st December. So this interest is chargeable from 1st January to 31st December. Then 1st February to 31st December. Then 1st March to 31st December. So every month we are charging interest to him. If you see the calculation, what is common in this? Amount withdrawn per month, 12% is common, and divided by 12 is common. In every calculation, what is common? So now we are using one mathematics का rule. Common को ये सबको अपने को add करना है. So 10,000 into 12% divided by 12, I will write it separately. And common में 12 plus 11 plus 10 plus 9 plus 8 up to 1. Up to 1. So if you know the shortcut in depreciation chapter, sum of years of digit method, you know the shortcut. This is 12 into 13 divided by 2. So this is 78. The total of this 12 to 1, 12 से 1 तक की total 78 है. 78 divided by 12. What is the calculation? 6.5. What is the calculation? 6.5. So 10,000 into interest rate into 6.5. 6.5 is nothing but it is 78 upon 12. इसका total लिया divided by 12 किया. 6.5. If you, so it is, if you see from the beginning of the month, if you calculate from the beginning, it will be the answer. If you calculate from the beginning. So tell me, if you calculate at the middle of, sorry, at the end of the every month, when you are calculating at the end of every month, so do the calculation and tell me the answer. So similarly, withdraw this month. Yes, beta. Interest on loan is also transferred to Bharat Tulna ji. 6.5 or 5.5. Very good. So if it is at the end, it is 5.5. If it is at the beginning, it's a 6.5. And if every time amount, important point is that your amount of withdrawal will be same. Okay. So you have to withdraw same amount every month. If you withdraw different amount every month, then it will be a difficult. So if you withdraw the amount, same amount every month, it will be 6.5 for the first day. On every month's first day you are withdrawing amount, it will be from the beginning. So from the beginning, it will be 1st Jan, 1st Feb. Its calculation is 6.5. If you withdraw amount at the end of the month, in that case, it will be 5.5. And suppose if you withdraw the amount at the middle of this month, in that case, it will be 6 months. So this is a shortcut. What is a shortcut? Amount withdrawn
it will be same, beta. Amount withdrawn will be same every month. Otherwise, this formula won't work. Into rate of interest into either 6.56 or 5.5. So now you can see this chart. You can write it afterwards at the beginning, at the end of the month. And I think at the middle of the month, it is 6 months. Okay. 6 months. See, beta, these are the some basic concepts of partnership. The first thing, what are important points in partnership? Yes, I'm going to tell you on very first day. So we are going to run this chapter for next 7 days. So what are important points that you should consider while solving partnership questions? Number one, so what I required in next 6 days, maintain your notebook properly is very, very important for partnership. Second one, all problems I can't cover up for partnership. First, make it very sure. Develop understanding, difficult adjustment, and very, very important point, every time think whether capital is increasing or whether capital is reducing. Capital increasing means he is our creditor, we have to pay him, and if capital is decreasing, he is our debtor. So you have to develop your thinking every time. In partnership, it's very important. आपको आपका thinking develop करना पड़ेगा. पैसा देना है पार्टनर को या लेना है, वो सोचना पड़ेगा. पार्टनर को पैसा देना है तो वो अपना क्रेडिटर है, उसका कैपिटल बढ़ने वाला है, और यदि उससे पैसा लेना है तो उसका कैपिटल कम होने वाला है. ये आपको याद रखना है. Third important point, all difficult adjustment I already explained you. Understand basics of every chapter. Basics of every chapter, very, very important. Now in first chapter, what is partnership deed? If silent, तो क्या होगा, नहीं होगा, ये सोचना है. नंबर 4, बेसिक्स के बाद नंबर 4 का पॉइंट है, try to solve all questions. Try to solve all question of study material. And fifth point, try to do maximum posting. If you are not getting correct answer also, but in exam, suppose partnership का क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम पोस्टिंग करके जाइए. डिफिकल्ट चैप्टर है, मुझे पता है, बट हमारे स्टूडेंट्स कभी गिव अप नहीं करते. डोंट गिव अप. Please do maximum posting of partnership in exam. Adjustments will carry marks, so at least your posting will give you 1 mark. So out of 10, suppose if you don't tally also, you'll get easily 6 to 7 marks. So beta, this is a chapter where it is not like average due date. If your answer is wrong, everything is lost. Okay, here important point, step marking are there. So step marking के वजह से you will get maximum marks in partnership if you opt this question. And suppose if similar question it's not there in exam, so try to solve this question at the end. Okay, so don't try this question at the beginning of your exam. Okay, so keep this question after 2 hours. Okay, after 2 hours, don't try to solve this question immediately. चलो कुछ questions कर लेते हैं. I will take extra 10 minutes का session beta, because I just want to finish this chapter. And please now from next time I need some extra timing beta. तो extra timing मुझे चाहिए होगा. So just we are going to start with some illustration part. Promise me. मेरा session कल भी है क्या? कल है या परसों है मेरा session? Just checking my schedule. एक सेशन मिस हुआ है तो वो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे. आई थिंक मेरा सेशन रोज है नेक्स्ट इसमें. अरे वाह, रोज मैं आपको मिलने वाला हूँ. अभी नेक्स्ट सेशन मेरा मंडे को है. मंडे से फ्राइडे रोज हूं मैं आपके साथ. सैटरडे संडे मुझे छुट्टी दिया गया है. ओके,
ठीक है। सो मंडे टू फ्राइडे रोज डेली रहूंगा मैं आपको, नेक्स्ट वीक में तो पूरा साथ में ही हूँ मैं आपके, और उसके नेक्स्ट वीक में भी साथ में रहूंगा। यस, सो आई होप आप एंजॉय भी करोगे मेरे साथ। तो आपको आज थोड़ा होमवर्क देके मैं रखता हूँ। बेटा 5 दिन, अरे वाह, एक नंबर काम किया आईसीआई ने। डेली ये रहेगा तो ब्रेक होने का चांस ही नहीं है। डेली आपको, अभी आपको पार्टनरशिप ही करना है नेक्स्ट 5 डेज अकाउंट्स में। चलो ठीक है। टुडे थोड़ा हेवी डोज नहीं होने देते। यस, मंडे से हम लोग ये करते हैं। यस बेटा, थैंक यू भुवनेश्वरी। निगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है, ये मानवी खन्ना को इतना तो पता होना चाहिए बेटा, अकाउंट्स में निगेटिव मार्किंग नहीं होती। मानवी जी, पहली बार सीए कोर्स का ज्ञान ले रही हो क्या आप? निगेटिव मार्किंग होता है क्या अकाउंट्स में? आज एक काम करना, 2 दिन है ना, अभी पहले तो पार्टनरशिप के बेसिक स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, आज मैं रुकता हूँ। आप पहले पार्टनरशिप के आज बेसिक स्ट्रॉन्ग करो। ट्राई टू सॉल्व दिस फर्स्ट यूनिट एंड सेकंड यूनिट के बेसिक्स पढ़ के आना। डेली यू हैव टू रीड नेक्स्ट डे का बेसिक्स। सो यू हैव टू स्टडी। यस, मैं बता के रखता हूं, यूनिट 2, यू हैव 2 days प्लीज। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्राई टू रीड दिस गुडविल। गुडविल को रीड कीजिए। इन नेक्स्ट सेशन यू विल डेफिनेटली एंजॉय। सो आज हम लोग रुकते हैं, मैं ज्यादा हेवी डोज नहीं देना चाहता हूं, आप पहले खुद ट्राई कीजिए, यू ट्राई बाय योर ओन, एंड इन नेक्स्ट सेशन we are going to start with goodwill adjustment. So we are meeting on Monday. I hope till that time you will solve this unit 1 ke all problems, all difficult questions also. And unit 2 basics, I'm going to start it in the next session. Chalo, thank you. Till that, bye bye. Nisarg ji.